जी नमस्कार। हमारे बीच में जीजेपीसी के वेस्टर्न जोन के रीजनल चेयरमैन श्री अशोक गजेरा जी ज्वाइन हुए हैं। सर, हम जीजेपीसी की जो भी हमारे मेंबर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, मैं एक बार जीजेपीसी की तरफ से, अशोक भाई की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के जो हमारे दोनों जो प्रमुख स्पीकर्स हैं, श्री हितेश औचर जी और सैकत राय, आप दोनों जन का मैं यहाँ पे जो केयर रेटिंग एजेंसी से हैं, मैं आप दोनों जन का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और ये पोस्ट कोविड के बाद में, जब ये मार्च महीना अभी चल रहा है, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमारी इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए, अन्य इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इंडस्ट्री के लोगों को रेटिंग्स के जो सिस्टम्स और किस ढंग से अपने रेटिंग्स को रिटेन कर सके, किस ढंग से आगे अपने फाइनेंशियल्स को प्रॉपर्ली एड्रेस कर सके, इस वेबिनार के माध्यम से आप इस चीजों को हमारे मेंबर्स तक निश्चित तौर पे आप गाइड करेंगे और अपनी गाइडलाइंस को पहुंचाएंगे, जिससे मेंबर्स लाभान्वित हो सके और अगले साल अपने फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट्स है, अपने रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए और जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करते हुए, जिससे वो अपने फाइनेंशियल नीड्स को मीट कर सके। तो मैं अधिक समय न लेते हुए अब अशोक अशोक भाई, आप कुछ करना चाहेंगे? सर, मैं सीधे प्रेजेंटेशन पे जाऊं? प्रेजेंटेशन में चलो ना। ठीक है, तो मैं अब हितेश जी से और साइकत जी से अनुरोध करूंगा कि सर आप जो है अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे मेंबर्स जुड़ रहे हैं और हम जो है मैं मिथिलेश पांडे, हमारी कलीग मृणाली, थोड़े समय के लिए अब हम विराम लेते हैं। ये पूरे प्रेजेंटेशन के बाद में क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं और जो जुड़ चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सर आप जो है प्रेजेंटेशन के बाद में आप अपने प्रश्न को Q&A में या चैट बॉक्स में रखिए। आपके प्रश्नों को हम जो हमारे आज के स्पीकर्स हैं उनके समक्ष हम ले जाएंगे और आपके प्रश्नों का आंसर लेने का हम प्रयास करेंगे। तो सर आप जो है प्लीज अब टेक ओवर करें, हितेश जी और साइकत जी। Thank you, Mr. Pandey. A very warm welcome to all our panelists and all the guests who are here. बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी का and for Gemden Jewelry Export Promotion Council आज हमें ये मौका देने के लिए। So let's straight dive in. We are already 8 minutes past the time. So I will take you very quickly through what we are about. So myself, Saikat Roy. I hope, are you able to see my screen? Just 1 minute, I will start the sharing. Yeah, I hope you are able to see my screen now. Is my screen visible? Yes, Saikat. Yeah, great. So very quickly, I manage the Western region for client coverage. All the large corporate BFSI clients, etc., are managed by me. Hitesh, my colleague, is the sector specialist for Gemden Jewelry industry. So I will quickly first take you through what is CARE Ratings. So we are the second largest rating agency in India. We have a market cap of about 1500 crore as of the moment, and we have wide coverage. We are probably the Atmanirbhar rating agency of this country. We don't have any foreign parent. We are the only homegrown rating agency in the country. These are some of our core values that we have. If you look at our group structure, we have a few subsidiaries. We have CARE Risk Solutions, which is into software, forex management, etc., credit risk management. So we supply these softwares to banks and financial institutions. Then we have CARE Advisory, which is doing TVs, techno-economic viability report, detailed project reports, etc. And we also have CARE Africa in Mauritius and CARE Ratings Nepal. And we are largely held by institutional investors. There is no promoter body per se. So this is our geographical coverage. We also have tie-up with Japan Credit Rating Agency and Russian Credit Rating Agency ACRA for rating customers located in those geographies.
Why should a customer prefer CARE Ratings over other rating agencies? So this is for the financial year FY21. You will see that CARE almost has a 26% market share in terms of debt markets, all private placements. CRA 1, 2, 3 are the other leading agencies. And for public placements, you will see we have almost 1/4 market share. This is the Hello. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Saikat, your voice is not coming. Saikat, you are not audible. Hello. सैकत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. Hello. आप प्लीज कॉल करके बताइए, मुझे लगता है कि सुन नहीं पा रहे हो. Yeah. हम कॉल कर रहे हैं उनको, 1 सेकंड. Okay. ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ टेक्निकल वजह से जो है आवाज नहीं आ रही है. Are you able to see me now? And we can hear you. Saikat, now we can hear you. I think now you should hear me more clearly. Should I continue? But your voice is breaking. Hello. Okay. Is it better now? Now it is better. Okay, great. So you see in the emerging category of Your slide. Start sharing again because. अभी आप स्टार्ट कर सकते हैं. Yeah. Great. Sorry for the interruption. So what I was saying is in the emerging bond category of AA minus to AA plus, you will see again that CARE was one of the. आपका जो है इसके पहले की जो स्लाइड थी वो भी लोग नहीं देख पाए थे क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी. हाँ पहले की. हाँ. Okay. हाँ यहाँ से. Okay. Saying is that ET 500 Economic Times top 500 listed companies in FY20, we have a market share of 45%. So 45% of the ET top 500 companies we have rated. And similarly, if you look at Financial Express top 1000 and the privately placed bond market also, which is in the emerging category, we also have substantial rating penetration. So just to take you quickly through our rating process. So there is a very, very detailed rating process which we follow. So you have an analyst and then you have a separate quality control team. And then after going through various committees is the final rating which is giving out. These are some of our major corporates who we rate with. So this was very briefly about who CARE Ratings is. And I will now share the other presentation which is for today's topic. Hitesh, is this presentation now visible? Yeah, it's visible. Okay. So this is the topic of our discussion today, ladies and gentlemen, and that why do we need a rating? So basically, I will take you through the topic that what is the concept of credit rating and what is why do one should do a credit rating. So what is a credit rating? Credit rating basically shows that whether the issuer, which is the client who takes the rating, is able to repay the debt on time or not. Now, why is this important? This is important because as per regulatory guidelines, the banks assess the risk parameter of a customer before the lending. So lower the risk, lower is the risk premium, hence lower is the interest rate. Higher the risk premium, hence higher the interest rate. So which basically as a thumb rule means that whoever has getting a higher rating, banks are more able to give them cheaper cost of lending rate, which directly impacts higher profitability for that particular entity. So this is one of the main reasons.
Now, what does a credit rating agency, credit rating does not represent? It is not a one-time evaluation. It is not formula-based. It is based on judgmental, and it is not an recommendation to invest or to lend. Now, while doing this process of credit rating, there are various factors which we appraise of. So the external factors is industry risk. Okay, Hitesh will go into much greater detail in the second part when we will be discussing that. So these are the four pillars of analysis that we call. Financial risk is your past financial track record. What is the earning capacity? What are the future projections? Management risk is especially important in terms of small and medium and emerging enterprises, because sometimes we say 40-year-old company, 30-year-old company, or a 5-year-old company. So the moment you say a 40-year-old company, it means that this particular entity has seen so many ups and downs and seen so many cycles, and they have survived through it, which itself gives a lot of credibility. So the people behind the show in managing the risk of the company is a very important business parameter for us. Business risk also means your relationship, all the stakeholders. Are you able to get market credit? Are you able to collect your debtors in time, etc., etc. This is basically the process of credit rating and how it flows. All the documents are collected, and then client interaction happens, the site visit is required, and finally the rating committee gives the rating. And for first time rating, there is a process of acceptance before a rating letter and a press release is issued. Now, this is the risk premium which I was talking about. Now, you see what is the guideline over here. We have something called a capital adequacy ratio, CAR. Now, capital adequacy ratio is 9%. So when you have a 9% capital adequacy ratio, which means that for every 100 rupees lent by the bank, 9 rupees they have to keep aside as capital. Now for that 9 rupees, उसके लिए risk score और risk weight है. तो risk weight ट्रिपल बी अगर रेटिंग आया तो 100% है. मतलब 100 रुपया अगर लोन दिया और 9 रुपीज बैंक को कैपिटल रखना है, तो 9 रुपीज का 100%, तो 9 रुपया रखना पड़ेगा. बट अगर ए कैटेगरी है तो 50%, 9 रुपया का 50%, 4.5 रुपया. डबल ए का 30 और ट्रिपल ए सबसे हाईएस्ट रेटिंग आया तो सिर्फ 20 रुपया रखना पड़ेगा. 9 रुपीज इंटू 20%, तो 1 रुपया 80 पैसा. तो बेसिकली 100 रुपया लेंडिंग करेंगे अगर ट्रिपल बी कस्टमर को, तो बैंक को 9 रुपया जमा रखना पड़ेगा एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. बट वही 100 रुपया अगर मैं ट्रिपल ए कस्टमर को बैंक दे, तो बैंक को सिर्फ 1 रुपया 80 पैसा रखना पड़ेगा. अब बैंक को कहाँ से पैसा मिलता है? बैंक को भी या तो किसी ने इक्विटी दिया होगा, या तो उन्होंने डिपॉजिट लिया होगा, या तो उन्होंने डेट लिया होगा, उसका भी खर्चा लगता है. तो बैंक को जब 9 रुपया लगना पड़ेगा, उनका खर्चा ज्यादा है. बैंक को जब 1 रुपया 80 पैसा रखना पड़ेगा, उनका खर्चा कम है, क्योंकि लेंडिंग तो वही 100 रुपया हो रही है. So this savings that is happening, 9 rupees minus 1 rupee 80 paise from triple B to triple A, this is the savings which is the savings of risk premium. And this savings the bank passes on to the customer. कि अगर मैं 9 रुपया रख रहा हूँ 100 रुपया के लिए, तो मेरा कोई सेविंग्स नहीं है, तो मैं शायद आपको फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करूंगा. और अगर मैं ट्रिपल ए को रेट कर रहा हूँ वही 100 रुपया, तो मुझे 1 रुपया 80 पैसा रखना पड़ेगा. मेरी पैसा बच रहा है, so I will pass on some benefit to you. Instead of 10%, I will charge you maybe 6.5 or 7%. So this is the reason why credit rating gets so much importance. Hitesh has compiled this data. You can see the government securities yield as of 5 years and 10 years. That you can see a difference how it has moved in the last 4-5 months also. So this is the benchmark in debt capital markets. The GSEC 10 years is the benchmark. So as of now, if 10-year bond is 622, then plus 68 basis points aega. So a AAA customer probably will get bank funding somewhere close to around 680, 690, around 7%. And you see how it increases. By the time you come to triple B minus,
which is the starting point of investment grade, it almost doubles. तो जो ट्रिपल ए कस्टमर को 7% के आसपास मिल रहा था, वो बढ़ के उनको कम से कम 11.5-12% हो जाएगा. So the better the rating, more savings in capital adequacy for the bank or for the investor, and that savings of capital adequacy is passed on to the customer in terms of interest rate savings. So this is one of the major items. And before we move on, I would just like to say a few points why you should take credit ratings. Now, what is a credit rating? Credit ratings will help you in doing 4-5 things mainly. One, it is a benchmark against global practices. Globally क्या हो रहा है उसके लिए benchmark. For example, we are playing cricket. हम अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेल के बड़ा खुश हो रहे हैं. But the moment you go to play at every stage, हम दियोदर ट्रॉफी खेलने जाते हैं तो वहाँ कंपटीशन बढ़ जाती है, फिर रणजी ट्रॉफी खेलने जाते हैं फिर वहाँ और कंपटीशन बढ़ जाएगी, और जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाएंगे तो मोर कंपटीशन. सो द क्लाइंट हैज टू डिसाइड कि हमें किसके अगेंस्ट में बेंचमार्क करना है. तो दिस रेटिंग अगर आज गई कि मेरी आज ये रेटिंग है, तो इसको ये मत सोचिए कि ज्यादा आया कि कम आया. इट इज अ कॉल ऑन अकॉर्डिंग टू द एंटायर यूनिवर्स मेरी क्या पोजीशन है. टेक इट एज अ फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट. If somebody is taking borrowing for the first time, rating it could become like a project report or a preparatory document. It is also like a marketing tool. It is authenticated info. हम सब LinkedIn पे है, हम सब Facebook पे है. हर एक जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है आप एक्सेप्ट तो नहीं करते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि सामने कौन है, नहीं पता मेरा डेटा कहाँ जाएगा. आप छानबीन करते हो, आप पता करते हो कि कौन है, उसके बाद अगर कोई फ्रेंड है तो डेफिनेटली आप एक्सेप्ट करते हो. आप सोचिए, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी अनजान आदमी का, किसी अनजान एंटिटी हमसे बिजनेस कैसे करे. तो उनको भी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने एक बार कुछ लिख के दे दिया है तो दे नो कि एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इन्होंने कुछ डेटा दिया है, तो अच्छा है, बुरा है, मीडियम है, जो भी है यही है. सो दे कैन टेक अ कॉन्शियस कॉल ऑफ डीलिंग विथ यू. Based on these criteria, we had done a short survey, and in that survey also all the customers who had responded, we can see that 32% of them have said that enhanced customer confidence. Almost 21% of them have said that the banks, after looking at the rating, that yes, the data is authenticated, they are getting lower interest rates, and in some cases for first time borrowers they are saying that 16% is getting faster loan processing. So this is basically the background of why a rating is required and what a rating means. Now we'll take you through sector specific comments for the industry. Over to you, Hitesh. Yeah, thanks, Saikat. Most of us will be aware of how this industry functions. काफी ज़्यादा, इनफैक्ट आप लोगों को ज़्यादा मालूमात होगी in terms of the gems and jewelry sector, how it performs, क्या होता है, क्या नहीं होता है, how the movement is. But from the credit rating perspective side, we are trying to show you certain slides which will tell you कि हम किस नजरिए से देखते हैं सेक्टर को, and how we try to analyze this sector, and that is how we also take into consideration the complete feedback, whether it is from the market, whether it is from the bankers, whether it is from the investors. So I will just go through certain slides जिसमें हम बता रहे हैं कि how we bifurcate the industry. So gems and jewelry industry as a whole is, as you're aware, it is a big contributor to the GDP. So there is a lot of focus of the government towards this sector, not just because of its contribution, but it is also a very large employee generation sector. So both these factors actually bring this sector in the limelight as compared to all other sectors. So, so India is no doubt the largest diamond processor and exporter in the world. Okay, but more importantly, why the government looks at this sector is because of its contribution, exports contribution largely, and a second most important thing is the largest employer generation for among many other sectors. So that's how the sector is. I will just move you ahead in terms of what is the gold value chain. So there are players which are in the upstream sectors, which are the mining sectors.
then we slowly come towards the downstream sectors, जहाँ पे हम लोग refining देखते हैं, bullion trading देखते हैं, jewelry manufacturing देखते हैं, and then even in jewelry manufacturing there are wholesalers and retailers. हम लोग ये bifurcate करते हैं in a way to understand which company is falling in which category, and accordingly the overall analysis is getting changed. So माइनर का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, ट्रेडर का एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा, ज्वेलरी में मैन्युफैक्चरर का in jewelry also wholesalers can be looked differently and retailers can be looked differently. So that's how it is. In terms of diamond value chain, again it is mining, then there is midstream, which is what we call the core of Indian let's say gems and jewelry sector, which is basically cut and polished diamonds and jewelry manufacturing, which comes largely into the midstream. And again, then we go back onto the diamond sector as well, onto the downstream side, which is basically the wholesale and retail of diamond studded gold jewelry. So in general, this is how we also bifurcate the sector and try to analyze each and every company which is up there for the rating. If you can go on the next slide. So what is our approach in terms of understanding a particular company? Saikat has earlier mentioned in his slides कि what all we look at. So we look at two major things. एक होती है external risk and एक होती है internal risk. When I am saying external risk, I am seeing specifically about the sector, how the industry is performing. इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे प्लेयर को इम्पैक्ट हो रहा है, वो चीज से आपको भी इम्पैक्ट हो रहा है. इट इज वेरी स्पेसिफिक दैट most of these things will impact all the players within the industry. किसी को ज्यादा इम्पैक्ट होगा, किसी को लेस इम्पैक्ट होगा, लेकिन इम्पैक्ट जरूर होगा. So these are basically external risk factors which we look into. And then there are internal risk factors which are very specific towards a company. So हम लोगों की इंडस्ट्री का मूवमेंट कैसा है, बट विद इन द इंडस्ट्री सो नॉट ऑल प्लेयर्स आर डूइंग बैड एंड नॉट ऑल प्लेयर्स आर डूइंग गुड. There is always a basket wherein we see certain players are doing well, certain players are not doing well, certain players are performing on an average basis. So to understand more deeper into the particular company, apart from the external risk हम लोग जो देखते हैं, उसके अलावा we give a lot of importance on the internal risk. And when we are saying internal risk, our methodology is to understand how is the management of the company. So how is the business risk, how is the financial risk, and then comes the industry risk. But management risk में हम लोग क्या देखते हैं is more about the potential of the promoter and a track record. Like Saikat has mentioned कि 4 साल वाला कंपनी और 40 साल वाला कंपनी, उसको देखने का तरीका नजरिया अलग होता है, even for a rating agency. आप लोग भी even when you are also doing a lot of trading activity, कोई नया अगर कंपनी होगा तो you start with a very small credit period to that company or very small credit amount to that company. Once you gain confidence, start gaining confidence, you increase your business accordingly or you increase your turnover accordingly. As far as management risk is concerned, we look into the same thing. We look at the promoter, we look at the quality of the promoter, the track record, कितने साल से है market में. We also try to analyze what is the general feedback about the promoter. How is the market looking at the particular promoter? And how is his track record in terms of not just doing business, but overall corporate governance as well. So any individual thing may also be impacting a certain category of rating if at all the promoter's experience or there is a certain glitch into a promoter's track record. So each and everything is actually looked into very much in a detailed manner. Now coming on to the second factor, which is nothing else but the business risk. Abhi business risk is very important because like I mentioned, जो हम लोग ने earlier slides देखा है, there are very much different kind of categories of players who are, there are certain traders only, उनकी business risk कुछ अलग होंगी. There are certain only manufacturers or job creators. There are certain players who जो सिर्फ job basis पे काम करते हैं. There are certain players who are present across the value chain.
There are certain other players who are only believing into a certain category of product. तो हर एक कंपनी का business risk will keep on changing based on how much exposure it has and where it is actually working. So in order to understand that, our broad parameters to look into is raw material sourcing कहाँ से करते हैं, उनका competitive position कैसा है. So competitive position एक diamond trader का diamond trader से ही देखेंगे. We will not go to a jewelry manufacturer and देखें कि इसका competition position कैसा है. नहीं. We will look into a general pool or category of diamond traders to understand how the competitive position is of a particular trader. Coming now to the product mix. Now product mix is also very much important because it shows how much, let's say, comfortable you are in a volatile dynamic or a business market. So what happens is there can be certain phases wherein you will find a significant boom in demand for a particular product. अगर वो प्रोडक्ट आपके बास्केट में है तो आपकी चल पड़ी. अगर वो प्रोडक्ट आपके बास्केट में नहीं है तो you keep on losing business for that much period of time. So product mix is very much important. Product mix is not just about color of a diamond, quality of a diamond, or let's say design of diamonds. It is also about sizes of diamonds. So a lot of product mix actually gives you a lot of support in terms of volatility in the market and how you are able to, let's say, minimize the impact of the volatility in certain product categories. Level of diversification and assessment of counterparty risk. When we are seeing level of diversification is, कभी कभी क्या होता है, कुछ manufacturers are only dependent on 2 or 3 companies for their sales product. In that scenario, if those companies are getting hampered, then there is a significant risk coming into a company which is only trading for a 2 or 3 players. However, what we look at is how diversified you are in terms of not just your product profile or your client base, but we also look कि आप कितने markets में diversified हो. So if at all you are trading only to a one particular or a select category of players, only in the Belgium market or only in the Middle East market, and tomorrow if anything goes wrong in a particular country or a particular area, then you are likely to get most impacted. So abhi, just recently before the pandemic started, there were a lot of traders, या हमारे यहाँ पे भी कुछ players थे जिनका हांगकांग मार्केट में एक्सपोजर 85-90% था. So these were the main players जिनका immediate rating, let's say, action हुआ in terms of negative outlook कि ये players को monitor करना पड़ेगा, इनका 90% business सिर्फ एक ही country में, and that Hong Kong is facing a problem. तो last 2 years में what we have seen is Hong Kong में जब जैसे riots हुए थे, that impacted these players. Riots होके खत्म नहीं हुए, pandemic आ गया. As you are all aware, most of the Asian countries actually route through Hong Kong. So again, these players got impacted. European markets में एकदम shutdown आ गया था, तो there are certain players who were focused towards European markets, they got impacted. But if there are other players who are actually catering to USA, Hong Kong, Australia, India, Germany, European markets, then relatively their ratings will remain stable in such a kind of a scenario. Coming on to the next point is the hedging mechanism. यहाँ पे, especially in the gems and jewelry sector, we find that there are very few players in the market who are actually doing a lot of hedging. Most of the players ignore it because हमारे लिए तो natural hedge है, we don't have to hedge anything. But there is always a time mismatch. While I agree on a yearly basis आप देखेंगे तो मैंने 100 करोड़ का माल import किया है, 150 करोड़ export किया है, तो मेरे को ज़्यादा hedging की जरूरत नहीं है because I am a natural hedger. But it is not about 100 करोड़ आया और 150 करोड़ गया, but it is also about timing when you imported and when you exported and the rate at that point. So it may not be necessary in a gems and jewelry sector कि आपको 100% hedging की जरूरत है. But to the extent whatever is open in the open market position, अगर उतने amount की certain category की hedging अगर आप करते हैं, तो that is always looked in a positive manner by all rating agencies, not just rating agencies, but also by other financial institutions, which means your investors and your bankers also.
उसमें 1-आधा% आपका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है, बट आपकी रिस्क काफी बच जाती है. सो bankers, investors will take it on a positive note. Coming on to the financial risk aspect. So when I'm saying financial risk aspect, we are seeing actually what we look into in a detailed manner as far as the financial risk is concerned. So overall financial performance to hota hai, but this is also very crucial to understand in terms of how we look at every financial aspect and every financial ratio. Working capital कैसा होता है, receivable position कैसा है, inventory position कैसा है, not just the past track record. Past में maybe you have done a relatively stable performance, but now you have a product category which is likely to help you grow more. And that is how we also take into consideration the overall projections of the company कि आप कौन से इसमें है, क्या करने वाले हो आगे जाके. Is there any change in product, any product which is getting into a limelight? There were certain category of diamonds which got a really high demand. So all these aspects are also looked into the financial risk. I will help you in detail in the slides going ahead. Industry risk में तो like Saikat has also already explained, demand supply कैसा होता है, regulatory environment कैसा होता है, competition levels. So all these are the broad parameters we look into. Saikat, if you can go on the next slide. So like I mentioned, in terms of the management risk, as far as Indian gems and jewelry sector is concerned, यहाँ पे मैनेजमेंट काफी क्लोजली हेल्ड फैमिली एंटिटीज होते हैं. सो द होल मैनेजमेंट इज बेसिकली a group of family members who manages it, whether it is in the Indian market or whether it is branches which are located outside the Indian market or outside countries. So they operate through a very close knit entities, and these are critical aspects. मतलब purchase and sales is all done by most of the family members. So it is more of a kind of a family kind of a management policy, especially in the Indian markets. So what we look into these things is basically how the promoters are, how is the group, past track record of the group. Here we also not just look at the promoters or the group, but we also try to get an understanding कि उनका personal net worth कैसा है in terms of financial flexibility going ahead, या promoter का नाम कैसा है and whether bankers are willing to pay him. And promoter का नाम कैसा होता है, that is based on the past track record of the promoter and what he has done in the past. यहाँ पे एक important चीज होती है constitution of the entity. If at all the entity is, let's say, a partnership firm or a joint family, then normally bankers or lenders, they actually give a one notch lower rating for this entity. Why? Because is category mein there is always a possibility of let's say your net worth or the capital being drawn back. Now इसको दो तरीके से देखा जा सकता है. देखने वाला बोलेगा कि रिस्क है कि पार्टनर कैपिटल निकाल सकता है, बट बोलने वाला बोल सकता है कि पूरी रिस्क जिम्मेदारी मेरे पे है, तो मैं गलत तो कर ही नहीं सकता. सो दीज आर टू वेरी मच डाइवर्स व्यूज. Okay, but we need to find a balance, and that also is also dependent upon, or to come to a conclusion, is also dependent highly upon the management interaction, how the management is, how knowledgeable the management is, whether they are aware of the sector or aware of things which are going across the market. Going on to the next slide, we come on to the business risk. So business risk mein, like I mentioned earlier also, India being a leader in cutting and polishing diamond as well as in jewelry manufacturing, terms of operations, the industry witnessed intense competition, and it is basically a low bargaining power as far as the manufacturers are concerned, and there is a significantly higher amount of competition within players, whether it is cut and polished diamonds or whether it is gold jewelry. So when we are looking at cut and polished diamonds, we majorly look into what is the access to rough diamonds, whether it is from the primary markets, matlab DTC holders, or whether it is from the secondary markets wherein you actually are buying diamonds from a local source.
majorly from a local source, or it can be also to the diamond trading hubs like Antwerp or Hong Kong. As far as revenue diversification is concerned, we will look into geographical diversification of the customers. मतलब कौन से markets में present हो, whether it is just a single location or diverse location, and also we look into products. So products can be different categories or different sizes of carats of diamonds. It can be also different types of jewelry manufacturing, and it can also be different type of product manufacturing. We also look into, when we are looking at cut and polished diamonds, we also look into transactions within related parties. As you are aware कि Indian businesses, especially gems and jewelry में, diamond trading में, local company and company which is based abroad where you are selling, they are actually related entities. इसका मतलब है कि प्रमोटर की कंपनी बाहर भी होती है, who buys the diamonds and sell it in the particular local market. So for a rating agency to understand how fungible or how legal is the business, we always try to look at the transactions within the related parties, which is a very important thing. And these transactions within related parties may also affect the credit rating of a particular company. As far as gold jewelry is concerned, it is more about the volume game. So inventory levels कैसे होते हैं, hedging mechanism क्या होता है, because gold prices are highly volatile. Revenue diversification again is more crucial part. But in gold jewelry, we look at same store sales growth. इसका मतलब है कि if I am actually servicing a particular let's say player in the market, वो player से मुझे repeat orders कितने आ रहे हैं. अगर मुझे हर एक प्लेयर से, हर एक कस्टमर से रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, इट मींस मेरा क्रेडिट प्रोफाइल इज गुड, एंड दैट इज व्हाई आई एम बीइंग लाइट. सिमिलरली अगर मेरा खुद के ज्वेलरी स्टोर्स है, तो मैं ये भी देखता हूं कि मेरा रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट कितना है. मतलब अगर मेरे 10 स्टोर है, तो 10 स्टोर का टोटल स्क्वायर फीट divided by my how much is my quantum of let's say jewelry sale, that will give me basically the revenue per square feet, which is very important because it will give me an average growth across my stores or my store chains. We also look into movement in gross margin because gold jewelry में specifically we look into it because margins, if you look at gold jewelry making में, are very low. So that is why we also categorically look into movement in gross margins, which helps us to understand ki how much is really the value add for a particular player and how much he is benefiting. On the next slide, yeah. Yes, coming on to the financial risk, like I mentioned earlier, in especially in gems and jewelry, apart from the financial ratios, which is basically profit कितना हुआ, growth कितना हुआ, आपका debt कितना है, coverage कितना है, but more importance is given on cash flow analysis. अगर आपका profit अच्छा है लेकिन debtors बहुत ज़्यादा है, it is of no use. Rating agencies will actually be concerned about it and they will say कि अगर debtor cycle ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी में प्रॉब्लम है. So cash flow analysis is a very crucial part. There are certain levels of inventory management also. अगर inventory बहुत ज़्यादा है, then also it is not good. As far as inventory is concerned, there are certain companies wherein there is always a certain level of inventory which is at a higher side. That's what we do in our research when we look at most of these companies कि historically inventory movement कैसा है. अगर कोई प्रमोटर है जिसके पास इन्वेंट्री लेवल हमेशा से ज्यादा रही है, तो ही मे नॉट बी स्कोरिंग दैट मच निगेटिवली ऑन दैट पार्ट, बट vis-a-vis कोई एक प्लेयर है जिसमें इन्वेंट्री मूवमेंट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है. सो ऑल दीज very let's say kind of tiny things, but it does get considered in the overall rating. It is also about working capital analysis and foreign exchange risk basically. So how you are managing the foreign exchange risk is also very important. Like I mentioned, hedging part was covered earlier. So that is how what we cover in the overall financial risk.
Going on to the next slide, as far as cash flow and liquidity is concerned, we look into the cash flow analysis in terms of operations, investments and financing. When we are saying operations, it is more about कि cash flow management कैसा है as far as the working capital is concerned. When we are looking into investment, we look at कि कितना requirement है for a fixed asset or a capex or a financial support. And when we are looking at financing, we evaluate actually the repayment obligation or capability of a player. सो कैश फ्लो में हम लोग तीन तरीके से देखते हैं. ऑपरेशंस में हम लोग देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज होता है, इन्वेस्टिंग कैसे होता है फॉर फिक्स्ड एसेट्स, एंड वेदर देयर इज एनी फाइनेंशियल सपोर्ट which is required for the group entities also. And in financing, we look at the repayment obligation. Next slide. Yeah, so as far as liquidity analysis is concerned, is basically liquidity is nothing but how much cash is being maintained or how much is the unused working capital limit. Now, this is always a cushion for us. It is always a comfort for us. Whether it is a banker to bolega 100% utilize hona chahiye, but it is not always a right thing, because at certain times when there is a volatility or when there are untimely situation, if at all there is a cushion which is kept that can be utilized, then there can be a stabilization of a business. But if you're always utilized at a much higher level, then you lose that let's say a second chance as far as let's say achieving the deadline or the commitment is concerned in times of a very volatile market. So as far as liquidity is concerned, we actually look into how much is the cushion which is available. So that cushion can always be taken into consideration कि promoter के पास कितना bandwidth है कि वो खुद भी कितना पैसा लाता है. That also can be taken as a liquidity cushion. How much is the undrawn facility, that can also be taken as a cushion. Second and most important thing is कि if you want any kind of a loan or a debt, how much loan you are likely to get, that can also be a kind of a financial flexibility which we look at, which is also considered as a liquidity assessment. यहाँ पे एक important चीज है कि we do not look at the, let's say, a collateral. Maybe a collateral can be a good liquidity, but it cannot be considered into the liquidity aspect. So माल है मेरे पास तो 10 किलो सोना पड़ा है, that is not sufficient. We normally doesn't look into the liquidation factor of assets for understanding the liquidity. Going on to the next slide, just coming as far as the industry is concerned, जैसे हम देखते हैं कि industry barriers कैसे हैं, how is the demand supply dynamics and how are the price trends. When we are saying industry barriers, कि कोई new player अगर enter होना चाहता है, कितना आसान है या कितना difficult है for that player to enter into the market, is what we try to look into. Business cycles में we try to look at what level is the business cycle, whether it is upward market, whether it is downward market, whether it has peaked or whether it is likely to slow down. All these aspects are taken into consideration. Coming on to the macroeconomic development, हमको सिर्फ इंडस्ट्री को देख के खुश होना या बुरा लगना इंपॉर्टेंट नहीं है. वी ऑल्सो नीड टू लुक इनटू कि ओवरऑल हाउ इज द इंडियन इकोनॉमी डूइंग or overall how are the global economies doing, because a lot of demand is actually dependent on how these sectors or how the economy is doing. So we do keep a close check on the macroeconomic developments, both in terms of manufacturers as well as consumer economy. And then we also look into foreign trade policies by of government. So within countries अगर कुछ उठाव चढ़ाव होता है या कुछ अच्छा बुरा होता है, तो that also will get impacted in terms of the industry risk. So in nutshell, this is what is all about in terms of understanding a particular sector or doing the credit rating, what we do. I will just take you to the next slide. Yeah, so industry updates में, like I have mentioned here, only up to September 2020 की कितना हालत बुरा था sector का, and all of you are aware now that currently how good the market is in the last 4 months. So there has been a substantial amount of recovery in the last 4 to 5 months. On to the next slide.
So based on that, what we have done so far is roughly we are doing ratings of 115 companies in care, which are related to the gems and jewelry or the gems and jewelry sector. So basically, this can be all players. Cut and polish diamond हो सकते हैं, traders हो सकते हैं. इसमें there can also be a lot of jewelry manufacturers. There can be also retail chain outlets. So in categories में roughly 19% of the players are now rated at A category. There are some 34% of players who are now rated in triple B category. Now both these category A or triple B are investment grade. So लगभग 53% of the entire portfolio is actually in an investment category for the gems and jewelry sector. And double B, B or C जो देखते हैं, that basically these are the non-investment grade category, which is around 35 to 40%. Yeah, on to the next slide. So I think this has already been covered by CARE, by Saikat, I guess. So this is what it is all about as far as credit rating is concerned, and this is what our portfolio is. Now we are open to question as in terms of any questions from all of you. Yeah, back to you, sir. थैंक यू हितेश जी, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया, मेंबर्स तक निश्चित तौर पे चीजें प्रॉपर्ली पहुंच पाई हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चंस जो हमारे पास में है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। यस सर। जैसे आपने बताया कि हांगकांग में जो डाउनफॉल हुआ, इस तरह से रेटिंग पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स की है, कुछ कंट्री स्पेसिफिक फोकस्ड एरियाज हमारे हैं, तो इसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है? जैसे मोस्टली हम हांगकांग में एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से और उस चैनल से दूसरे का डिस्ट्रीब्यूट होता है, दुबई को बेचते हैं, या समझिए हम इस तरह के जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं उसके द्वारा हमारा गुड्स जो है दूसरी जगह पहुंचता है। तो इस चीज को कैसे हम रेटिंग में कवर कर सकते हैं कि उसको इस ढंग से डैमेज न उठाना पड़े कंपनीज को? ओके, सो जैसे हांगकांग में जब राइट्स हुए थे, जब बहुत सारे क्लैशेस हुए थे विद इन द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन हांगकांग, एंड देयर वाज अ शटडाउन, तो देयर वाज वन टाइम सडनली बहुत सारे लोगों के डिस्पैचेस रुक गए थे या किसी का सप्लाई अटक गया था हांगकांग में, इट वाज बिकम डिफिकल्ट। सो ऐसे टाइम में जिनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है इन हांगकांग, उन सर्टन कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स को हम लोग को निगेटिव आउटलुक पे लेके जाना पड़ा, बिकॉज वी वर ऑल्सो नॉट श्योर कि ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी। दैट्स वाई व्हाट वी डिड वाज we actually took the sector to a negative outlook in terms of all those companies who have a focus in Hong Kong or major, मतलब 70% से ज्यादा अगर बिजनेस हांगकांग में हो रहा है, तो ऐसे प्लेयर्स को हम लोगों ने निगेटिव आउटलुक किया था। We were continuously interacting with most of these players and we were taking the ground, understanding the ground reality. And जब हमें लगा कि एक particular player is now out of the woods जैसे बोल सकते हैं, तो then we again have the relook at the rating, and in certain cases we have reinstated a stable outlook again for those companies. So एक कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अनसर्टेनिटी पीरियड आ जाता है, तो अगर हम लोग भी कंक्लूड नहीं कर पाते हैं कि ये कब तक चलेगा, तो we don't downgrade the rating at this time, but we rather decide to take it to a negative outlook कि it is an indication, we will monitor the rating कैसा क्या होता है, and then we will take a rating call. So इसमें इसकी रेटिंग समझिए आपने 2 महीने पहले करी है, और जो उनकी रेटिंग डिक्लाइन है, ऐसे भी केसेस हमें नोटिस हुए हैं, तो उनको क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं कि दोबारा आपसे अप्रोच करें, क्योंकि अब चीजें ओपन हो रही हैं, तो उनका बिजनेस का यस। सो लाइक सैकत जी ने बताया कि ये रेटिंग है ना, दिस इज नॉट अ वन टाइम असाइनमेंट, साल में एक बार होता है ऐसा नहीं है। whatever happens within the market, we can always have a review of the rating. So ऐसा नहीं है कि हमने 2 महीने पहले निगेटिव आउटलुक किया मतलब ये डाउनग्रेड ही होगा, या 2 महीने पहले डाउनग्रेड किया मतलब अभी आगे जाके निगेटिव ही होगा, ऐसे होता नहीं है। नॉर्मली दैट इज व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ पीपल। व्हाट हैपेंस इज एट दैट पॉइंट इन टाइम जो कॉल लेना था वो ले लिया, बट इफ एट ऑल वी सी एनी इंप्रूवमेंट, लाइक आपको मैंने बताया कि होल सेक्टर वाज इन अ नेगेटिव आउटलुक, it was a blanket negative outlook for the whole sector when the pandemic started. Right.
आज की तारीख में कुछ प्लेयर्स है जिनको लास्ट 4 महीने में अपग्रेड भी मिले हैं, एंड अभी भी कुछ प्लेयर्स है जिनका नेगेटिव आउटलुक कंटिन्यू हो रहा है. So like I said, it is all dependent, not yeah. Just to Yeah, add you to go ahead. Mr. Pandey, what Hitesh is saying, ratings is not cast in stone. If I can just give you an example of another industry, जैसे पावर प्रोजेक्ट या रोड प्रोजेक्ट आप देख लें, या तो आपका ही इंडस्ट्री में किसी ने नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना है, ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, वो फैक्ट्री चालू जब होगी 2.5 साल 3 साल बाद, उसका प्रोडक्शन चालू होगा, फिर उनका ज्वेलरी एक्सपोर्ट होगा, देन रेवेन्यू विल कम, वो एक स्टेज है. और जब आपने लैंड एक्वायर करके अब बस शुरू करेंगे फैक्ट्री, वो एक स्टेज है. सो इन दोनों स्टेज में बहुत अंतर है. सो रेटिंग इज नॉट कास्ट इन स्टोन. जो रेटिंग स्टार्टिंग पॉइंट में रहेगी, आई थिंक एंडिंग पॉइंट में कुछ और रेटिंग हो सके. So you have to understand the rating, the alphabet which comes AA, AAA, whatever, and the outlook is very different. What is the purpose of the rating? The rating is also very meant to update the investor community, the banker community कि आपने जिसमें लोन दिया है या पैसा लगा है क्या हो रहा है. That is the responsibility. So COVID was a special situation क्योंकि अप्रैल में तो समझ में ये नहीं आ रहा था कि 14 डेज है कि 140 डेज है. So that is why in some of the sectors we have seen, आप रियल एस्टेट ले लीजिए, बॉम्बे में स्टैम्प ड्यूटी कट, बैंगलोर में जो रियल एस्टेट मूवमेंट हो रहा है, व्हाट वी थॉट इट विल बी इन मे एंड व्हाट इट इज इन फरवरी is very different actually. So which is good for the industry. So things can move, and rating per se as per regulatory guideline is 24/7 live. तो अगर जरूरत पड़ी और अगर 365 डेज में 365 न्यू इंफॉर्मेशन आया तो हमें 365 रिव्यू करने पड़ेंगे. मतलब दैट इज हाउ इट इज. ऐसा आता नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. बट अगर 365 डेज में 365 टाइम न्यूज आइटम आया तो वी हैव टू रिव्यू 365 टाइम इन द ईयर इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डू दैट. सो इट्स लाइक परपेचुअली लाइव. डेढ़ सेकंड जी. दूसरा एक प्रश्न ये था कि जैसे कि आप हमारी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने की दरकार नहीं है क्योंकि आप काफी टाइम से जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप स्पेशलाइज्ड हैं कि हमारी इंडस्ट्री को आपने काफी टाइम से नजदीक से देखा हुआ. इवन मैं कई साल पहले भी इस चीज में हम आपसे जुड़े हैं और हमने इस तरह के वेबिनार्स और सेमिनार्स किए थे जिसमें कि आपने लोगों को एक्सप्लेन करे थे. अभी जो हमारी इंडस्ट्री का पैटर्न है आप देखेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म्स, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स, इस तरह के फॉर्म्स की तादाद काफी है. और जैसा आपने बताया कि लिमिटेड फॉर्म्स, एचयूएफ, इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको थोड़ा ज्यादा वरीयता मिलती है. तो कहीं आपको इस तरफ रेटिंग एजेंसीज आपको फोकस नहीं करना चाहिए कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स में इस तरह की जो कंपनीज हैं उनको भी एक अलग से कंसिडरेशन किया जाए. या सो आपने सही बोला है कि वी स्टार्ट विथ इट. जैसा आपको बताया जाए कि हम लोग देखते समय वी स्टार्ट विथ इट, बट अगर किसी केस में हमको कंफर्ट आता है तो इट्स नॉट नेसेसरीली द रेटिंग विल बी लेट्स से सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन ब्रांड. ऐसा नहीं है. देयर आर सर्टेन पार्टनरशिप फर्म्स आल्सो which are having a much higher rating as compared to other private limited or even listed companies. So we are not limiting it. Only thing is कि इन केसेस में हमारा एनालिसिस थोड़ा डीपर होता है. हमारा अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट मोर इंफॉर्मेशन, एंड इफ सर्टेन प्लेयर्स आर शेयरिंग दैट मच इंफॉर्मेशन then rating agencies might take a call that basis on what we have received there can be a difference of opinion in terms of the rating. So ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप कंपनीज को कम ही रेटिंग मिलेगा, नॉट एट ऑल. ओनली थिंग इज उनसे कंफर्ट थोड़ा हमको ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू अदर लिमिट, और अगर वो कंफर्ट मिल जाता है तो द रेटिंग्स कैन बी ऑफ द सेम ईयर. And that risk factor comes more from fear or from the possibility of कि कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है. But tax laws allow करता है कि they withdraw the money again put it in. So because the laws allow this to happen, so take out तो किया ठीक है, और जो 40 साल से है और वेरी वेल नोन प्रोमोटर है उन्होंने पैसा एक्स्ट्रा डाला भी होगा. बट सपोज नहीं डाला तो क्या? It is more to do with how the laws allow something, and in another company it is not allowed. You have to only take salary or dividend or whatever.
शेखर जी, मुझे लगता है जिस तरह से आपके टीम मेंबर हितेश जी ने और आपने जिस तरह से लोगों को समझाए हैं, तो और तो प्रश्न हमारे सामने इस वक्त फिलहाल नहीं आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जिन लोगों की रेटिंग लास्ट 2 मंथ में या 2.5 मंथ में आपकी कंपनीज द्वारा की गई है और उनके सर्टेन ऑब्जर्वेशंस है कि आज मैं बेटर पोजीशन में हूं, मैं आपको बता सकता हूं एज ए जीजेपीसी कि 3 महीने के अंदर जो हमारे सेक्टर्स का एक्सपोर्ट ग्रोथ है, और आपके पास भी इसके इन्फॉर्मेशन है, आपके न्यूज लेटर्स में देखते रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो जिस ढंग से ग्रोथ आप देख रहे हैं हमारे सेक्टर्स में, तो उन्हें अगर अपनी रेटिंग्स के बारे में फिर से आपको अप्रोच करना हो तो कोई ऐसे कॉन्टेक्ट्स या कुछ ऐसे नंबर्स, इस तरह की चीजें हमको आप शेयर कर दें, जिससे मैं लोगों को कम्युनिकेट कर सकूं कि अगर आपको लग रहा है कि हमारी चीजें प्रॉपर नहीं हुई है और अब मैं अपनी रेटिंग्स को रिव्यू करने के लिए फिर से अप्रोच कर सकता हूं, तो जिससे वो इजिली अप्रोच आपको कर सके और फिर इस चीज को जो पहले उनको जो सर्टिफिकेट मिला है उसको रिवाइज करवा सके। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि उसके लिए कोई कांटेक्ट पर्सन या कोई ईमेल आईडी या इस तरह का चीज अगर आप हमें प्रोवाइड करवा पाए। बिल्कुल सर, मैं कांटेक्ट पर्सन हूँ, मेरा ईमेल आईडी आपके पास है। इफ यू वांट आई कैन पुट माय नंबर ऑन द चैट बॉक्स हियर आल्सो, एंड anytime you are free to call me. I will direct it. Any location pan India, people from your council members can call me because I am sitting in the head office. I will connect them with the respective branch and respective location. I can be your one point of contact. ग्रेट शेखर जी, थैंक यू सो मच। जो ऑडियंस में हमारे मेंबर्स बैठे हैं, मैं उनके माध्यम से बताना चाहूंगा एग्जैक्टली अभी ईयर एंडिंग है, लोग अपने जॉब में हैं और टाइम थोड़ा ऑड है, इसलिए हम इस वेबिनार्स के माध्यम से बहुत कम लोगों तक अप्रोच हो पाए हैं, लेकिन हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए दोबारा हम थोड़ा टाइम इंटरवल लंबा लेकर के इस चीज को ड्राइव करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली जो 1-to-1 हमको अप्रोच हुए हैं लोग, उसमें काफी लोगों की नीड है कि आप तक अप्रोच होने की। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गैप है कि आप रीच नहीं हो पा रहे हैं, हमारे मेंबर्स रीच नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको हम कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। और आपका मुझे चैट बॉक्स में कॉन्टेक्ट मिल गया है और हमारी टीम के पास में तो ऑलरेडी आपके सारे डिटेल्स हैं, तो मैं जो मेंबर्स को शेयर करूंगा और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें आपकी तरफ से प्रॉपर रिवर्ट मिले, जिससे कि जब हम अगले वेबिनार्स में या इस तरह के कार्यक्रम में मिले तो मेंबर्स के पास में और भी क्वेश्चंस हैं और उनके प्रश्नों का सॉल्यूशंस आपकी तरफ से मिल सके। तो एक बार फिर से मैं हमारे रीजनल चेयरमैन जो यहाँ पे हैं अशोक भाई का, और आप दोनों जो आज के गेस्ट हमारे साइकत जी और रितेश जी, आप दोनों जन का मैं DJEPC की तरफ से एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए और मैं फिर विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जल्दी हम आपसे इस संबंध में कनेक्ट होंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. It was a Thank pleasure. you, sir. Pleasure. Thank Thank you. you. Thank you, Ashok.